Hello, good morning students. So welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the last article of the topic limits. So इसके पहले लिमिट्स का algebraic फंक्शन हुआ है, लिमिट्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. So today I will start the next is what limits at infinity. So what is infinity? So it is infinity is the there are two this is a plus infinity or minus infinity. This is plus infinity. This is minus infinity. This is a real number which is the largest and highest number, highest positive number. So that is a plus infinity. This minus infinity is the lowest or smallest real values. That is the minus infinity. So this is limit x tends to infinity f of x. So x is a variable, infinity is a real values. If x takes the real values which is the largest or highest real values, that is we call the plus infinity. If limit x tends to minus infinity, limit x tends to minus infinity of f of x. So this minus infinity means this x takes the real values, smallest or lowest values, lowest real values, that is what minus infinity. So there are some result, some formulae. Limit x tends to infinity, 1 by x is equal to what? 0. Because we know that 1 upon 10 it is a 0.1, 1 upon 100 it is equal to 0.01, 1 upon 1000 it is equal to 0.001, 1 upon 10,000, 1 upon 10,000 it is equal to 0.0001. It means what? If denominator becomes larger and larger, this term goes to what? Close to 0. अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहेगा तो ये टर्म, ये जो रैशनल टर्म है, इट गोज टू अप्रोचेस टू 0. It approaches to 0. So this becomes 0.000000001, which is very nearest to 0, very close to 0, which is approaches to 0. Means if 1 upon x tends to infinity, that is equal to what? 0. Not only this, so this is limit x tends to infinity, 1 upon x raised to n, which is also 0. But this is n is greater than 0, non-negative. This is x tends to infinity. So 1 upon x, 2 upon x, 3 upon x, 4 upon x also it is equal to what? 0. X raised to n means what? X square, x cube, x raised to 4. So that x tends to infinity, that is equal to what? 0. Number third result, if limit x tends to 0, 1 upon x modulus x raised to n is equal to infinity when n is greater than 0. Limit x tends to 0, 1 upon modulus absolute value of x raised to n, this n is greater than 0 means positive, whose value is what? Infinity. Now one more formula, so that is for limit x tends to infinity of constant term, it is equal to what? Constant term. So constant term का लिमिट constant term ही होता है, at x tends to 0 रहने दो, at x tends to infinity रहने दो, at x tends to pi by 2 रहने दो, what you read maybe, it is always equal to what? 1. Always equal to what? Constant term k. So this is a formula for limits of exponential function. Limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x is equal to e. Limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x is equal to e. x का रेसिप्रोकल यहाँ पर होना जरूरी है, 1 by x. It is equal to what? e. So ये सेम फार्मूला यहाँ पर कैसे बनता है देखो. But at x tends to infinity, limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x raised to x is equal to e. We know that this e is an irrational number. This is a symbol which is less than 3 and greater than 2. So ये और ये, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 by x है, यहाँ पर 1 by x है, यहाँ पर x है, exactly reverse है, opposite है. x tends to 0 था, x tends to क्या है? Infinity. If this condition satisfied, the limit of this function is equal to what? A. So these are some result which we called the formulae of limits at infinity. Okay, so this is the last article of the topic limits. Okay, बहुत important है. Infinity क्या है? This is the largest, plus infinity, this is the largest real values, highest real values,
and minus infinity, this is the lowest or smallest real values. So x is a variable which takes the real values which is the highest or largest, that is plus infinity. प्लस इन्फिनिटी को सिर्फ इन्फिनिटी भी लिख सकते टू बी सेम. सो उसके कुछ रिजल्ट है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं. विल टेक एक्चुअल एग्जांपल हाउ टू सॉल्व, हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.7. Now let's start the exercise 7.7 of that first example. Evaluate the limits. So first example, limit x tends to infinity, ax cube plus bx square plus cx plus d divided by ex cube fx square plus gx plus ch. Okay, so this is the f of x, this is a g of x, this is a rational function. X tends to infinity है, x tends to infinity. So in order to solve such type of example, we have to divide each term of f of x and each term of g of x by the highest power of x. Is it clear? In order to solve such type of examples, each term of f of x is the numerator, g of x the denominator. Each term of f of x and g of x by the highest power of x. So यहाँ पर highest power x की कितनी है? x क्यूब है, 3 है. x की highest power कितनी है? 3 है. It means we have to divide each term of f of x and g of x by what? x cube. So x cube upon x cube a, x square upon x cube x, c upon x square, d upon x cube. हर टर्म को each term of f of x, divide each term of f of x by the highest power of x. So x क्यूब से यहाँ डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, यहाँ पर भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया. x अपॉन x क्यूब x स्क्वायर अपॉन x क्यूब x, d upon x cube cancel. Okay, same in the denominator, e plus f upon x plus g upon x square plus g upon x square plus h upon x cube. And we know the formula, limit x tends to infinity, 1 upon x raised to n is equal to what? 0. n is positive integer. So देखो x square x cube सब integer power positive है. So this term become 0, this term become 0, all terms, all terms are 0. So here a plus 0 plus 0 plus 0 divided by e plus 0 plus 0 plus 0. So what is the answer? A by a. So this is the limit of the function. So it is very simple procedure to evaluate when limit at x tends to infinity. What is the procedure? If f of x and g of x are function, it means it is a rational function. Then each term of f of x and each term of g of x divide by the highest power of variable. Okay, so x की जो भी highest power है उससे divide करना, definitely within some step you will get the limit of that function. Okay, is it clear? I hope you understand the process to evaluate the limits at infinity. Right, next let's see the second example from the same exercise. x square plus 3x plus 2 divided by these three factors, limit x tends to infinity है. So यहाँ पर you can mention in this line, divide on both side by x cube. So here what is the highest power? यहाँ पर x cube होगा, check it, x cube plus 3x, x cube है यहाँ पर. Highest power of x is what? 3. ऊपर x cube से डिवाइड करेंगे, नीचे भी x cube से डिवाइड करेंगे. So this becomes limit x tends to infinity. Mention here, divide on both sides by x cube. X cube by x cube 1, 3 by x square plus 2 by x cube divided by, in the denominator, x plus 4 divided by x minus 6 divided by x minus 3 divided by x. Okay, so denominator में x cube को मैंने split किया in 3 terms, x into x into x, that is actual what? X cube. So numerator तो as it is रहेगा,
limit x tends to infinity, that is 1 plus 3 by x square plus 2 by x cube whole divided by, सेपरेट डिवाइड करेंगे 1 plus 4 by x, 1 minus 6 by x, 1 minus 3 by x. ये थ्री फैक्टर को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, एक्सपांड भी किया तो सेम आएगा, बट नो नीड टू मोर एफर्ट्स फॉर सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स. So this is 0, this term is 0, this term is 0, this term is 0, this term is 0. Mention this result, this formula here. So this becomes in the numerator 1 plus 0 plus 0. 1 plus 0 into 1 minus 0 into 1 minus 0. So obviously numerator is 1, 1 into 1 into 1 is 1, 1 by 1 is what? 1. So this is the limit. It's very simple process. So remember one thing, that's important thing is what? We have to divide on both sides by the highest power of x. Okay, we'll take now next third. Now let's start the third example of first question of exercise 7.7. So यहाँ पर first of all we have to check the highest power of variable x, that is 2. तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आप लाइन में मेंशन करो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय x स्क्वायर. सो रिमेंबर हियर द आंसर ऑफ एवरी एग्जांपल ऑफ दिस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. सो इस एग्जांपल का क्या आंसर आएगा? 7/8. ओके, देखो कैसे आता है. सबको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 7 5/x minus 3 by x square, 8 minus 2 by x plus 7 by x square. 8 term 0 0 0 0. So mention here 7 plus 0 minus 0 upon 8 minus 0 plus 0. So what is the limit? 7/8. So this is the answer. This is shortcut. What is the shortcut here? The answer is always the coefficient of the highest power of variable. 7/8 is the answer. But you can mention here the formula limit x tends to infinity, 1 upon x raised to n is equal to 0 when n is greater than 0. So this is the third example of same exercise 7.7 of question number first. Let's start the second question now. Look at the first example now here. So first of all we have to check the highest power of x, that is 2. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है. स्क्वायर रूट ऑफ x raised to 4 is what? x square. Means obviously the highest power of x is what? 2. x square is the term, so we have to divide on both sides by x square. Limit x tends to 0 infinity, sorry, 7x square plus 2x minus 3 divided by x square whole divided by square root of x raised to 4x plus 2 divided by x square. So this is the first step. Divide on both sides by x square. Limit x tends to infinity. Separate divide करो 7 plus 2 by x minus 3 by x square. In denominator whole square root x raised to 4 plus x plus 2 divided by x raised to 4. x स्क्वायर रूट में जाने के बाद x raised to 4 बन जाएगा. इसको अगर रूट में इंक्लूड करना है x स्क्वायर को, तो दैट बिकम्स x raised to 4. अब न्यूमरेटर कीप एज इट इज. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 7 plus 2 by x minus 3 by x square whole divided by square root of x raised to 4 by x raised to 4 is 1. 1 by x cube, 1 by x cube plus 2 by x raised to 4. Now mention the result. Answer is 7 plus 0 minus 0 divided by square root of 1 plus 0 plus 0. So answer is 7 by square root of 1. So 7 by 1. What is answer? 7. What is the reference here? Limit x tends to infinity, 1 upon x raised to n is equal to 0. This is the formula. Got it? So very simple formula. Mention here n is greater than 0. Means positive integer होना जरूरी है. Okay. So this is the solution of very first example of question number 2.
Let's start the second example. But here we have to follow the procedure of limits of algebraic function, that is rationalization. Irrational factor को rational बनाना है. x square plus 4x plus 16. यहाँ पर ये नहीं, थोड़ा बड़ा स्पेस लगेगा इसको. I will start from here. Limit x tends to infinity. Square root of x square plus 4x plus 16 minus under root x square plus 16 divided by 1. Numerator denominator is 1. So multiplied on both sides by x square plus 4x plus 16 plus root x square plus 16 divided by square root of x square plus 4x plus 16 plus square root of x square plus 16 multiplied on both sides by इसका माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई करना. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन. नाउ हियर a minus b a plus b that becomes a square minus b square, a minus b a plus b, a square minus b square, x square plus 4x plus 16 minus x square minus 16 divided by 1 into this is same square root of x square plus 4x plus 16 plus square root of x square plus 16. So this becomes now irrational to rational. So we have to solve one more step. Limit x tends to infinity. Ax square plus 4x plus 16 minus x square plus 16 divided by denominator carry as it is 1 plus x square plus 4x plus 16 x square plus 16. This plus x square minus x square cancel. Okay, now it becomes limit x tends to infinity. Numerator becomes 4x plus 32. 4x plus 32 divided by this term as it is x square plus 4x plus 16 under root x square plus 16. Okay, now highest power of x is 1. डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है बट वो x स्क्वायर रूट में है, सो इट इज एक्चुअली x. सो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय x. दिस इज द नेक्स्ट टर्म. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 प्लस 32 बाय x डिवाइडेड बाय, इसको x से डिवाइड करेंगे, इसको भी x से डिवाइड करेंगे, बट अंदर जाने के बाद x स्क्वायर बन जाएगा वो. स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर plus square root of x square plus 16 divided by x square. So mention here the line divide on both side by x, not x square. ये square root में जाने के बाद x square हो गया. So this is what limit x tends to infinity. It's a 4 plus 32 by x in the numerator. In the denominator separate divide करो. 1 plus 4 by x plus 16 by x square. ये plus separate divide x square by x square 1, 16 by x square. Okay, now this term 0, this term 0, 0, 0 because x tends to infinity. So numerator 4 plus 0 divided by square root of 1 plus 0 plus 0 plus square root of 1 plus 0. It means numerator 4, denominator 1 plus 1. So 4 by 2. 4 by 2 is what? 2. So 2 is the limit. यहाँ पर मैंने एक दो स्टेप जंप की है, but it is very simple procedure. We have to divide the highest power of x. So here highest power of x कितना है? 1 है. तो हमें किस से डिवाइड करना है? x से डिवाइड करना है. नीचे सेपरेट x से डिवाइड किया और उस x को स्क्वायर रूट में इंक्लूड करने के बाद दैट बिकम्स व्हाट? x स्क्वायर. Okay, so this is the answer. 4 by 2 is 2. Root 1 means 1, root 1 means 1, 1 plus 1 is 2, 4 by 2 is 2. So limit is what? 2. We will take second example. Now let's start the third example of this.
सो हियर फर्स्ट अपन वी हैव टू रैशनलाइज, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इरेशनल फैक्टर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ मिडल साइन माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस। यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रैशनलाइजेशन। नाउ दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर x रेज टू 4, 1 इंटू दिस इज सेम, दिस कैंसल। नाउ हाईएस्ट पावर इज व्हाट, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, बट ये स्क्वायर रूट में है। सो डिवाइड करेंगे x स्क्वायर्स के, 4x स्क्वायर बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। गॉट इट? नाउ दिस x स्क्वायर कैंसल, दिस x स्क्वायर कैंसल। सो दिस लिमिट बिकम्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर इज अ प्योरली कांस्टेंट टर्म विच इज 4। डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में जाने के बाद x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर, x रेज टू 4 हो जाएगा, ये प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पर 1 रह गया। सो और वन मोर स्टेप, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर 4 सेपरेट डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस टर्म गोज टू 0 बिकॉज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस टर्म अप्रोचेस टू 0। सो न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, it's 4 by 1 plus 1 2. Again what is answer? 2. So 2 is the limit of this example, limit of this function. So यहाँ पर फर्स्ट रैशनलाइज करना ही इम्पॉर्टेंट है, और रैशनलाइज करने के बाद सो यहाँ पर लिमिट्स एट इन्फिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट फंक्शन मस्ट बी f of x upon g of x form. It means what? This should be rational function. So then and then only we can use the limits at infinity, which is 1 upon x raised to n goes to what? Approaches to what? 0. Okay. So this is the completion of third example of exercise 7.7. और 5 एग्जाम्पल बाकी है, आप ट्राई करो, आप कोशिश करो, डेफिनेटली आपको सॉल्व करेंगे। सो वी विल टेक दिस रिमेनिंग 5 एग्जाम्पल इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून ऑन दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।